Hi friends, can you hear me? This is Deepak Jaggi sir from Mumbai. So we start our live webinar. I can start. Hello friends, so this is Deepak Jaggi sir from Mumbai. I was reading your comments. Many people have requested me to take the lecture entire in English, as well as there were some students requesting for a Hindi lecture. So I'll just try to maintain a balance so that whosoever is attending this lecture, जो भी ये lecture attend कर रहा है, मैं English में भी बोलूँगा, I will speak in English as well as मैं हिंदी में भी बोलूँगा, I will also speak in Hindi, so that all the type of students will get equal benefits. Since the time is... Hello friends, so this is Deepak Jaggi sir from Mumbai. I was reading your comments. Many people have requested me to take the lecture entire in English, as well as there were some students. Yeah, friends, can you hear me? Are you there? Is there anyone on the chat box who can just say me, yeah, sir, I am audible to everyone? Since the time available is less, क्योंकि वक्त कम है, तो हमें बहुत ही जल्दी very soon काफी कुछ cover करना है. We have to cover many things. So first of all, friends, a quick recap. Advanced accounts के अंदर the chapters what are very important chapters. I'll start with the chapter liquidation of companies. Now liquidation of companies chapter के अंदर, friends, you need to remember first of all the legal order of payments. जो मेरे हिंदी के दोस्त हैं, आपको ये जानना जरूरी है बेटा कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर जब आएगा तो आपको लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट को याद करना बहुत ही जरूरी है. और लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट के अंदर आपको एक छोटा सा स्लोगन पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस स्लोगन. इट्स अ वेरी पॉपुलर स्लोगन विच सेज लाइक दिस. यूजुअली आई सिंग अ सॉन्ग. Here may be a short song. It says like this: लो 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 सादा पेड़ा dipped under pista elaichi. So low basically stands for the legal cost, and the next low stands for the liquidator's remuneration, and the next low stands for the liquidation expenses, and then sada stands for secured liabilities, and peda stands for preferential liabilities, and dipped stands for debenture holders, under stands for unsecured creditors, and pista and elaichi. So pista is preference shareholders and elaichi is equity shareholders. Trust me friends, now on 12th November, parso, that is just day after tomorrow, it is your exams. So I am sure you guys are knowing many things. आप लोगों को काफी कुछ आता है. In fact, almost सभी कुछ आता है. You know almost everything. I can give you a tip at the last moment that when you are studying this liquidation chapter, जब आप ये chapter पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये legal order आता है, लो सादा पेड़ा dipped under पिस्ता इलायची, अगर आपको ये order आता है, your time will be saved. And आप सबको पता है, you all know pretty well friends, time is the most essential element. जो आपका success का key है, आपकी सक्सेस की बेटा चाबी है, वो है आपका वक्त. बिकॉज सीए इंटर का जो स्टूडेंट होता है, सीए आईपीसीसी का जो स्टूडेंट होता है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट इज ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज पेपर. एंड व्हेन सम बिग क्वेश्चन कम्स, तो उसकी सोच में हिज थिंकिंग इटसेल्फ टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो फ्रेंड्स, वी डोंट वांट दैट.
This low, sada pera dipped under pista lychee, legal cost, liquidator's remuneration, liquidation expense. Then you have got the secured liabilities, preferential liabilities, debenture holders, that is the liabilities with a floating charge, unsecured liabilities, preference shareholders and equity shareholders. Remember this legal order. Say, if a question of final statement of account comes, अगर इम्तिहान में आपका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन आता है, सो आप बेटा पता क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद द वर्किंग्स. आप अपने वर्किंग्स में आएंगे. वर्किंग्स के अंदर इमीडिएटली फर्स्ट आप लोग देखेंगे कि पैसा कहां कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर ऑल द मनी इज कमिंग. सो प्लस 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 सब पैसे आ जाएंगे. वंस यू गेट द मनी, देन यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी. फिर आपको सारी पेमेंट्स करनी. पहले आप लीगल कॉस्ट को पे करेंगे, फिर रेम्यूनरेशन को पे करेंगे, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस को पे करेंगे. First you will pay to the, as I said, your legal cost, then you will pay to the remuneration, then you will pay to the expenses, then you will pay to secured liabilities जिनका एक fixed charge होता है, then you will pay to the preferential liabilities, that is basically nothing but all the government obligations, the statutory obligations. Then definitely you will make the payment to debenture holders. जब आप बेटा डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, उस समय टिल देन यू विल मेक द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ओनली अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन. हर बार यू विल अज्यूम, हर बार बेटा आप अज्यूम करेंगे माइंड में कि द कंपनी इज इंसॉल्वेंट. आई रिपीट वंस अगेन, every time friends you will assume that the company is insolvent. So at the time of making the principal payment, principal amount payment to the debenture holders, आप outstanding interest pay करेंगे, but only up to the date of liquidation. Then, if the company is able to make the full payment to unsecured liabilities, I repeat, अगर बाहर की जो liabilities हैं, जो unsecured liabilities हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर आप उन लाइबिलिटीज को पे कर सके, इफ यू आर एबल टू पे टू देम, देन डेफिनेटली फ्रेंड्स कंपनी इज सॉल्वेंट. और अगर कंपनी सॉल्वेंट होगा, देन बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स टू द शेयर होल्डर्स यू विल पे द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. और सर ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कब से कब तक होगा? डेफिनेटली फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द लिक्विडेशन टिल द डेट ऑफ मेकिंग द एक्चुअल पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. ये खास एडजस्टमेंट. और जो मैंने गेस्ट पेपर भी बेटा निकाला है, आई हैव गिवन यू अ गेस्ट पेपर. आई हैव सिलेक्टेड सम 20 क्वेश्चंस with lot of research. These questions have been been given to the students. I'm sure you all must be having them. I have given it in fact with solutions. If you don't have, you put it in the chat box. I will send links personally to all. You can join our Facebook page, DJC, Deepak Jaggi Classes, DJC. Just give a message that you want this Super 20 questions with solutions. Drop your email ID. My staff will send you by tomorrow or probably today itself after a certain period of time. So liquidation के अंदर बेटा please remember, start with a working note, collect the money, start making the payments to the liabilities. जहां पर पैसा खत्म, wherever money is over, समझ लो आपका question हो गया खत्म. Yes, wherever money is finished, your solution is finished. Then you come to the main answer, and in the main answer, definitely you will just do the posting of whatever is the amount paid. This is in case of the question of final statement of account. Friends, in case if a question of statement of affair comes, chances are high. Because in my Super 20 question, see, if you have got that, it is fine. Otherwise, I have got with me Super 20 questions. So in the Super 20 question, friends, if you see question number 19, I repeat once again, question number 19, this question is from Practice Manual only, XYZ Limited. And the balance sheet has been given to us. And in the next page, then he has given me, you can just check it. See, it is this question, friends, wherein 3 years gross profit and the expenses have been given. So when you are preparing the deficiency statement, that is list H. So to get the figure of profit and loss account,
you need to use that particular information. Whenever you are preparing list H in deficiency statement, जब भी आप list H बनाते हैं बेटा, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फिगर होता है, दैट इज लॉसेस, द डेबिट बैलेंस, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. उसमें आपको बहुत ही ज्यादा लेकिन ध्यान रखना पड़ता है. Whenever you are doing statement of affairs question, मेरे सुपर 20 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है. So in case if that comes in exam, you have to know that low, that is legal cost and the liquidator's remuneration and the liquidation expense you have to ignore. उसमें ignore करते हैं. सर उसमें ignore क्यों करते हैं? Because वो estimate होता है. And in estimates you cannot do the estimation of expenses. आप लाइबिलिटी की एस्टिमेटेड पेमेंट बेटा कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंस आप नहीं अंदाजा लगा सकते. तो एल फर्स्ट 3 एल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के क्वेश्चन में नहीं आएगा. बी केयरफुल. अच्छा, नाउ इन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप लोगों को एक खास जो चीज मुझे बतानी है, इन केस इफ इट कम्स इन एग्जाम, दैट इज रिलेटिंग टू नॉशनल कॉल. हाँ जी, नॉशनल कॉल में आपको बहुत ही ध्यान रखना है बेटा. आई एम श्योर आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो आपको पता ही है. इट्स बेसिकली व्हाट के भाई बैलेंस शीट देते हैं, बैलेंस शीट के अंदर कुछ शेयर्स फुली पेड अप होते हैं, इक्विटी शेयर्स कुछ पार्टली पेड अप होते हैं. तो जो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं, लाइक वेदर दे विल गिव यू द मनी और नॉट, सो यू विल डू डेफिनेटली बाय विच मेथड? यस, यू शुड डू दैट बाय द नॉशनल कॉल मेथड. और वो कब करना है सर? फ्रेंड्स, वो आपको बिल्कुल लास्ट में करना है. सर व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट में करना है? आई मीन पूरा आपका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, सारे एक्सपेंसेस को आपने पे कर लिया, सादा पेड़ा डिप्ट अंडर पिस्ता सबको आपने पे कर दिया. जब आपको इलायची की देने की बारी आएगी, दैट इज व्हेन यू हैव टू मेक द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन यू विल प्रिपेयर अ स्पेशल नोट wherein you will give the notional call treatment in the working note, and you will come to know कि भले आपको वो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर को पैसा देना है या प्रोबेबली उनसे पैसा लेना है, whether you have to give to them or whether you have to take from them. So be very much careful in liquidation of company chapter, because when you are giving the exam of advanced accounts, बेटा एडवांस अकाउंट के पेपर में भले वो न्यू सिलेबस हो या ओल्ड सिलेबस हो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आना ही है. मतलब अगर वो आना ही है तो आपको डेफिनेटली उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है. काफी वैरायटीज है इस चैप्टर में. यू हैव गॉट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्वेश्चन, यू हैव गॉट फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यू हैव गॉट लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज, यू हैव गॉट रिसीवर स्टेटमेंट. आपको पता होना चाहिए रिसीवर स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बट इट इज लिटिल डिफरेंट. मतलब टिल डिबेंचर होल्डर्स यू विल प्रिपेयर अ रिसीवर स्टेटमेंट, एंड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर ऑनवर्ड्स, आई मीन अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज ऑनवर्ड्स, यू विल मेक द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. आई एम श्योर आप जो भी कोचिंग क्लास में जाते थे, जो भी आपने टीचर से पढ़ाई की है, व्हाटएवर यू गाइस हैव डन द बेस्ट. So first of all, believe. See, whosoever is attending this particular webinar, friends, it is you who has to believe that yes, you can do this. And trust me, if you will believe, that day will be fantastic. I mean, ask to the universe that yes, I want 100 out of 100. And trust me, friends, you can get it. One of my students, Hardeep Singh, I repeat, it's not any advertisement mode, but even I'm getting very enthusiastic to say, Hardeep Singh, my intercessor, in fact, he was an IPCC student, so he got 99 out of 100. So if he can get, why you can't get? Definitely you can get it, friends. But only thing is you need to be focused, and more than focused, now you need to believe on yourself. आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. दूसरा मेरा सुपर 20 के अंदर फ्रेंड्स, यहां पर मेरी बात जो चल रही है, दैट इज नथिंग बट अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का एक क्वेश्चन है, जहां पर मैंने गेस किया है कि मे बी दे विल आस्क यू द ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू कंपनी और द परचेजिंग कंपनी. तो बी केयरफुल, बिकॉज सीए फाइनल का जो ओल्ड सिलेबस है
उनमें से कई टॉपिक्स, मेनी टॉपिक्स फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस हैज कम इन द न्यू सिलेबस ऑफ इंटरसी या आईपीसीसी, जो भी आप क्लास बोल। तो अब इसमें ऐसा है कि अमालगमेशन ऑफ कंपनी इन द ओल्ड सिलेबस सीए फाइनल, यूजुअली जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं ना, दे आर इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी। इंटर सीए या आईपीसीसी के ओल्ड सिलेबस में पहले जो आता था, यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग बाय रूल, बट यूजुअली इट वाज बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म, दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग, जहां पर आप वो रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, वो सब अकाउंट बनाते। तो मेरे गैस वर्क के अंदर जो हमने गैस किया, थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, सम टीचर से बात की है, व्हाटएवर, तो हमने गैस किया है कि प्रोबेबली लाइक यू नो बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी जो सीए फाइनल में पूछते हैं, समथिंग लाइक दैट दे कैन आस्क यू इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। सो बी केयरफुल। उसमें 3 बेसिक एंट्रीज तो आप सबको आना चाहिए। वन इज ऑफ कोर्स फॉर द बिजनेस परचेज, another is nothing but for the net assets taken over, and then definitely third is nothing but for the discharge of purchase consideration. See friends, amalgamation का question अगर आता है, amalgamation of companies, I repeat, if a question of amalgamation of companies coming, and it if means that's a wrong word, it has to come, वो आएगा ही, तो आपको बिल्कुल ज्यादा ध्यान देना है। अब आज से लेकर परसों सुबह तक, whenever you are doing amalgamation, friends, I give you a tip that at least 10 questions you solve. I repeat, at least 10 questions you solve only for purchase consideration calculation, nothing else. Only PC calculation. Because the student who knows PC calculation in amalgamation chapters, he knows that particular chapter. So don't waste time in doing big long questions in the house. Come on friends, have confidence in yourself. मतलब you need to be a smart student. जितना hard work आप करना चाहते थे, you have done throughout, and you have done very good, fantastic. Now this last 1.5 day is the smart work day. So when you will do smart work, I am sure आप चकदे फटे करेंगे। आप देखना आप कहां पर पहुंच जाएंगे। तो परचेज कंसीडरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ दैट। ऑफ कोर्स इफ इट इज क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, दैट इज द वेंडर कंपनी, जहां पर आप रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाते हैं। जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, दोज हु हैव बीन माय स्टूडेंट, आई गिव वन अगेन, इसके अंदर भी हमारा एक स्लोगन होता है, तू प्यार से लव प्यार कर। तू इज नथिंग बट द ट्रांसफर, प्यार इज नथिंग बट द परचेज कंसिडरेशन। To प्यार से, S is nothing but sale of assets which are not taken over by the purchasing company. E is expenses payment. To प्यार से love, love is nothing but liability payment which are not taken over by the purchasing company. To प्यार से love प्यार, that is P is preference shareholder settlement. And finally कर, कर मतलब C वाला कर, C, that is nothing but closing of accounts. Of course, see, I don't want you guys to change your method at this moment. So friends, whatever you have done, आपने बेटा जो भी किया है बहुत ही बेहतरीन किया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको अमालगमेशन चैप्टर में थोड़ी तकलीफ आ रही है, बिकॉज ये चैप्टर में यूजुअली बच्चों को तकलीफ आती है, तो आप हमें लेकिन चैट बॉक्स में लिख भेजिए, तो मैं आपको कुछ अमालगमेशन चैप्टर के स्पेसिफिक टिप्स आपको टाइप वगैरह करके भेज दूंगा। अब जैसे मैंने आपको बोला, एफबी पेज में डीजेसी में आप आ जाइए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू डू इट। ऑफ कोर्स आई मीन आई कैन नॉट डू मच, बट कोशिश करूंगा। इफ आई कैन डू इट, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो अमालगमेशन ऑफ कंपनी में फ्रेंड्स, बी केयरफुल फॉर द ओपनिंग एंट्रीज, इंटरकंपनी डेट्स कैंसल की एंट्री, then probably stock reserves की entry, like unrealized profit की जो entry होती है, because if a question is coming final CA level का, old syllabus का, तो definitely they can ask you something such good things as such. उसके बाद friends, I just want to discuss something about banking company accounts. अब मेरे सुपर 20 क्वेश्चन में बैंकिंग में प्रोबेबली आप लोग सोचेंगे कि सर आपने ये क्या दिया, बट मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया, we are coming with rebates on bills discounted का क्वेश्चन एंड AEO का क्वेश्चन।
Because that big question जहां पर you have to prepare an entire final accounts and balance sheet and profit and loss account, वो अगर आ जाता है तो trust me friends, वो ज्यादा आसान होता है. It is little lengthy, वो बड़ा होता है लेकिन वो simple होता है, वो standardized approach होता है. Rebate on bills discounted, that is unexpired discount के आप 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में करके जाएंगे. प्लीज बिफोर यू go for your exams, at least 3 to 4 questions आपके practice manual में, आपके classes के book में, I'm sure it must be there. So please do them. That is very important because they are that type of topic. वो ऐसा बेटा एक topic होता है जिसके अंदर आपको full mark मिल सकते हैं. मतलब I mean you can just get 6 to 7 marks, full marks. उसमें आपका आधा मार्क भी नहीं कटेगा. So be very much careful. Funda of unexpired discount आपको पता होना चाहिए. What is funda of unexpired discount? It is nothing but discount income received in advance. And last year received in advance is this year's income. So if there is this year's income, add to the income of discount. But current year unexpired discount is not current year's income. It's a liability. So it should be reduced. वो आपको current year की income से reduce करना पड़ेगा to get your final income, जो finally फिर profit and loss account में transfer होगा. In fact, unexpired discount में अगर final accounts का भी full question आता है, they can give you an adjustment. So be careful. Unexpired discount के adjustment आप बिल्कुल करके जाइए. Final accounts के question के अंदर they can give you the number of days and the date of bills and all. Because student usually क्या सोच के जाता है, भाई unexpired discount का question आएगा तो वो एक separate आएगा, final accounts is separate. But बेटा वो combine भी कर सकते हैं, वो दोनों questions को merge कर सकते हैं. Because CA Institute is becoming competitive. आप लोग सब होशियार बच्चे हैं, one of the best courses of the world आप लोग कर रहे हैं. So definitely बेटा वो कहां ना कहां थोड़ा competitiveness पेपर्स में करने की कोशिश करेंगे. So my bet for banking accounts is for the unexpired discount question and also for the AEO. What is AEO, sir? AEO is nothing but acceptances, endorsements and obligations. So acceptances, endorsements and obligations का जो question होता है, इसका बेटा जो concept है ना, it is on the TPG. Sir, what is TPG? It is third party guarantee का concept है. मतलब या तो आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करो, और अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो कंटीजेंट एसेट को भी रिकॉर्ड करो, कंटीजेंट लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करो. Then you have to record, friends, the contingent assets as well as the contingent liabilities. So I mean, like, you know, first time when it had come in exam, I still remember, I mean, students were, I mean, totally taken aback, like बिल्कुल हैरान हो गए थे, अरे ये क्या आ गया, because it was first time. हालांकि मॉड्यूल में वो क्वेश्चन था, मैनुअल पीएम में भी था, स्टिल स्टूडेंट ने उसको लाइट समझा था, एग्जाम में आ गया था. उस समय वो 11 मार्क का आया था जब पहली बार आया था. फर्स्ट टाइम इट हैड कम फॉर 11 मार्क्स. नाउ इट कम्स फॉर अराउंड 5 to 6 मार्क्स. चांसेस आर देयर, सो डोंट इग्नोर दैट. उसमें भी वैसा ही है, आइदर यू कैन गेट फुल मार्क्स और यू विल गेट 0 मार्क्स. मतलब उसमें बीच का गेयर नहीं है, या तो पूरा मिलेगा या तो 0 मिलेगा. उसमें आपको 1-2 मार्क ऐसे नहीं मिल सकते, आइदर यू आर करेक्ट और यू आर इनकरेक्ट. तो मेरे बैंकिंग अकाउंट्स के अंदर 2 लाइक यू नो बेट्स जा रहे हैं. वन इज फॉर द रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग एंड अनदर इज फॉर द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस. उसी का भाई है समझ लो बिल्स फॉर कलेक्शन, वो भी कुछ ऐसा ही है. बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट भी वो आपको पूछ सकता है, प्रैक्टिस मैनुअल में उसका क्वेश्चन है. एक बार जरूर आप करके जाएं, प्लीज डू दैट. I'm sure it will give you some good confidence. In case if a question of balance sheet comes in a bank, that will be fantastic. Wow. What do you more you want? You just remember, call Rajiv in Delhi, Bombay or Calcutta, but Indira asks for others. Chamchas bhai. Yeah, I mean, like, you know, for every chapter, I usually use this code words. Once the concept is clear, फिर ये code words बहुत ही help करते हैं students को. Because exam में time management is one of the biggest factor. So call is capital, Rajiv is reserves and surplus, Delhi is deposits, Bombay is borrowings, or is other liability and provisions. Call Rajiv in Delhi, Bombay or Calcutta is cash in hand and balance with the RBI, but is balance with the banks and money at call and short notice.
but Indira is investments, ask is advances, for is fixed assets, other is other assets. और दो footnotes होते हैं, there are two footnotes. Chamcha's bhai. So Chamcha's C is nothing but contingent liabilities and bhai is bills for collection. So for that I always say to the students, I mean what you should do the moment you go in the exam, the moment you see a question of banking account has come, जैसे आप देखते हो कि भाई बैंकिंग का क्वेश्चन भैया आ गया एग्जाम में और बैलेंस शीट पूछा है उसने, तो आपको क्या करना है, ना आओ देखो ना ताओ, सीधा आप ये फर्स्ट लेटर्स लिख दो, Paul, Rajiv, in Delhi, Bombay or Calcutta, but Indira asked for others, Chamcha's bhai, पूरा मत लिखना, just first letters. एक बार आपको लीड मिल जाएगी, once you get the lead, I'm sure you can complete it. Any such shortcuts, beta, I repeat, any such shortcuts, any steps, because for me as a teacher, I know it that steps are very useful. Even when I was a student, it made a lot of difference. So all the steps we have got, if you don't have beta, please let me know. I'm there to help you guys. See, this is not any, every time it is not give and take. भाई आप मेरा ये लो, वो लो, add करो, कुछ नहीं. आप के कुछ काम आ जाऊंगा, I love it. ऐसे भी कल मेरा birthday है यार, it is my birthday. So it's my birthday gift for all the CA students. Advanced accounting, may you do good. I'll be very much happy. I'll be very much happy. So friends, this was something about relating to the banking accounts. See, you can send us an email, send your email ID, message your email ID on the chat box or on the Facebook page, as I said, for Super 20 questions as well as any other queries. I'm there to help you guys always. अच्छा, अब मैं जरा बात कर लेता हूं, that is something relating to yeah, be careful. ये मेरे पास अब एक क्वेश्चन है relating to buyback of shares. Now buyback of shares में the minimum requirement of equity shares, that type of question can come in the exam, chances are high. And buyback of equity shares, maybe just remember one step. I mean, we always teach the students with a step. It says that first drink beer bottle. और सर क्या कर रहे हो आप? I mean, what you are doing on YouTube channel? You are saying the students to drink beer. No, I'm not saying. Sorry, I'm just saying. मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप ये steps याद रखिए, आपका buyback of equity share खत्म हो जाए. Tension free कीजिए. First sit, first drink beer bottle. Sir, what is first? It is nothing but check, confirm whether all the shares which are to be bought back are fully paid up or not. So fully paid up. First sit is nothing but sundry transactions. First sit again first, it is nothing but fresh issue. And when you're doing buyback of equity shares, it has to be buyback fresh issue only of preference shares. क्योंकि अगर आप fresh issue of equity share करते हैं, then the purpose of buyback will be defeated. वो dilution हो जाएगा नंबर का, फिर कोई मतलब ही नहीं उसका. So first sit, first drink. Drink is nothing but divisible profits. You can also use your security premiums and you can, create the CRR, capital redemption reserve. So first sit, first drink beer. Beer is nothing but buyback. So buyback की फिर आपकी जो भी entries होती है, whether you're buying bank at at par or maybe at premium, जो भी आपका buyback की entries आप वो करेंगे. And finally, beer bottle. Sir, what is bottle? It is nothing but bonus shares. So in case अगर वो आपको क्वेश्चन में बोनस शेयर्स के बारे में कुछ बोलेगा, so then definitely you have to do at the end. I mean, पहले बायबैक होगा, फिर बोनस इशू आपका डिक्लेयर होगा. So मेरे सुपर 20 क्वेश्चंस के अंदर, in my super 20 for buyback, my bet is going for calculation of the maximum number of shares. I mean, he will not give you, वो आपको नहीं देगा बेटा कि कितने शेयर्स बायबैक करने हैं, तो आपको वो खुद निकालने पड़ेंगे फॉलोइंग द कंपनीज एक्ट एज सच. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इन ग्रुप 2 आल्सो, वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में माय बेट इज गोइंग फॉर, जहां पर से इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो शेयर होल्डर्स हैं, एंड फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ Mr. X and Mr. Y in Green Limited. तो Mr. X के पास कुछ 12% फर्स्ट डिवेंचर्स हैं, 12% सेकंड डिवेंचर्स हैं,
some trade payables, and then shares are fully paid, about 50 shares. In short, this is a question, of course, of internal reconstruction, but in that it is not a straight question. Be careful. So you need to have that proper calculations. So in my Super 20, which I have already posted, I have also given you the solutions. So it's not only the question or the problem, solutions are there. So मेरा आपसे निवेदन है, I plead to you, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, I plead to you, आप ये Super 20 के क्वेश्चन जरूर करें. मैं बोलता हूं नहीं भी कुछ आता है, let us assume that एक भी क्वेश्चन नहीं भी आता है, let us assume that. हम क्यों इतना सोचे? Why we are thinking that something will come? But still they are from your syllabus. As if also you have to study something. As if also आपको प्रैक्टिस करना ही है हर चैप्टर में से. तो आप क्यों नहीं यही कर लेते हैं? It will give you some more confidence. भले कुछ और भी एग्जाम में आ जाए, बट ये क्वेश्चन करने से आपके सारे चैप्टर्स तो रिवाइज हो जाएंगे in a short span of time. So please try to do that. Now, before I go ahead, since the time is not there, it's already 10:30 in fact, I want to explain you one concept of time management. Very much important before we wind up. You know pretty well friends, exam के अंदर आपके पास 3 hours होते हैं, 3 घंटे होते हैं आपके पास एग्जाम में. 3 hours into 60 minutes if you do. So you have got better how much minutes, how much time you have got in exam? 180 minutes. 180 minutes. आप ये 180 minutes को divide this by 100 marks. So when you divide this by 100 marks, so you have got how much? You have got 1.8 minute per mark. You have got how much? 1.8 minute per mark. So in short, if a question is of 10 marks, so you will just do what? 1.8 into 10. Means maximum you have got how much minutes? You have got 18 minutes to solve that solution. If a question is of 15 marks, multiply that by 1.8, so you will get maximum 27 minutes. Trust me friends, my experience, I am 25 years old in this profession, not 1-2 years, 25 साल. So 25 years का मेरा experience आपको बोल सकता है that if you complete your advanced accounting paper, आपको कोई माइका लाल फेल नहीं कर सकता. No one can fail you, but you have to complete. I mean, you have to attempt all questions. If the moment 27 minutes is over now for a 15 mark question, जैसे ही 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए 27 मिनट खत्म हो जाता ना, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए. आप उस क्वेश्चन में जितना आपने किया, you can get very good marks in that. This is one of the best things in inter CA, in IPCC, in our CA exam, that अगर आपने कुछ सही किया आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, you will get good marks. So please remember this 1.8 minute का फंडा. I am sure friends you will pass, and you will pass with an exemption, 100% exemption. Trust me friends. I think so. The seminar time is over. We have lot of things, but still like somewhere but we need to wind up because आप लोगों का एग्जाम भी है. As for Super 20 questions are concerned, Super 20 questions will be uploaded on our FB page. You can download them. So my staff has just now given me instructions, so we will do the needful. So don't worry beta. There were many English crowd, many Hindi crowds. I just try to have a balance. मैंने कोशिश की. माफी चाहूंगा आप लोगों से अगर आपका मैंने टाइम कहां पर वेस्ट किया, बट मुझे ऐसा लगता है आई ट्राइड दैट इट कैन हेल्प यू. 4 लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है. क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है. मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है. तो मेरे दोस्तों, कम ऑन, डू इट. दिस टुमारो 24 आवर्स इतना स्मार्ट वर्क कीजिए, इतना अपने दिमाग का जितना आपने इतना अकाउंट्स पढ़ा है 11वीं कक्षा से, इतना जबरदस्त एडवांस अकाउंट्स में उसको इस्तेमाल कीजिए, मजा आ जाए. और हमें भी थोड़ी सी दुआएं दे देना.
So thank you so much. Join our Facebook page, Deepak Jaggi Classes. Facebook page है बेटा हमारा YouTube channel definitely एक तो CA Dreams भी हमारा ही channel है. We are also one of the people. We really thank to CA Dreams for giving us this platform. हमारा एक और channel भी है Target CA. So friends, आप लोग definitely अच्छा करेंगे. आपकी कोई भी query हो, doubt हो, so please let me know. I'm there to help you guys. And Chennai and South Indian students, if you are watching me live, so I am coming now, my recorded lectures will be played in Chennai very soon, 100% English. And of course, North के अंदर तो definitely हमारी pen drive वगैरह चलती रहती है. So right now, I sign off. Thank you so much and bye-bye. Good night. Have a very good exam. Love you all. Thank you.